time to market and enable partnership with third parties. Technical view में अगर हम देखते हैं, it can connect front ends with mobile apps and external services. It enables scalable and modular system architecture. It powers real-world applications like e-commerce, education platforms, IoT devices, social media or data analytics platforms. Business view में अगर हम देखें, APIs can be monetized directly or provide indirect revenue. Businesses can launch products and features quickly with the help of APIs. APIs allow third-party developers and partners to build on companies' platform. APIs provide structured access to data and improving decision making. But security is critical. Whenever we work with APIs, we have to keep in mind about the securities. As you know, APIs facilitates third-party integrations and partnerships. Robust API design and securities are essential for building trusted digital products. APIs are frequent attack targets. इसपे frequent attack targets होते हैं. Data breaches often happen through poorly secured APIs. Why use Laravel API for APIs? As you know, modern elegant PHP framework, RESTful routing and resource management is provided by Laravel. Authentication, authorization, validations, all these exist in Laravel and manage very well. It has active community and rich ecosystem. What is a RESTful API? REST stands for Representational State Transfer, predictable standardized HTTP methods. We have known HTTP methods like get, post, put, patch, delete, which are frequently used in RESTful APIs. Okay, I'm going to show a little bit demo for this talk. So we will have users, decks and their cards. We will have API controllers for those models. We will have routes, etc. First of all, key RESTful concepts, statelessness. सब जगह RESTful APIs के बारे में कहा जाता है कि RESTful या statelessness है. What does that mean? Every state must contain all necessary information. जब भी आप कोई REST API के endpoint को कॉल करते हो, वो कॉल एग्जीक्यूट होती है, API को सारा कुछ भूल जाती है. आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजते हो, आपको वो सारी चीज़ें उस पर दोबारा भेजनी है. This is known as statelessness. Your previous API request does not know anything about the second last API request. It's resource based. Everything is treated as a resource URI. Its HTTP status codes are 200, 401, 404, which are normally used. HTTP status codes 200 OK, 403 forbidden, 404 not found, 500 for internal server error. This is about flashcard API overview, which I am going to show in the code area. I will show you Postman as a testing tool. With Postman, we can access APIs. An easy and quick solution to test APIs in development. We will use Postman in this work. Okay, we have the routes directory where we will define our routes for the stateless APIs. First of all, as Sardar Bhai mentioned, we have to run PHP artisan install API for enabling the Sanctum. Basically, in Laravel we have Sanctum and Passport, but for simple projects and simple API treatment where no third-party OAuth types are involved, we use Sanctums for those things. So let's talk about Sanctum. Laravel Sanctum provides authentication for mobile apps, single-page applications, and token-based APIs. API tokens are stored in a single database table. We can use different tokens for APIs or for personal access. Tokens have abilities like scopes. जैसे हम लोग roles and permissions define करते हैं. In the same way, we define abilities for tokens.
Every API have their own abilities, what they can perform and what they cannot perform. Laravel Sanctum routes can be protected with authentication. For initial configuration, by default SQLite is configured in Laravel application for APIs, but we can change it to another database like I have been using MySQL. So let's move on to setting up data for our models. We will have some controllers and models. Here we will have to deal with Laravel built-in ORM, object relational mappers. Each database table has a corresponding model when we work with APIs. As you know, model allow to insert, update, delete records, allow users to map data for APIs with resources. Okay, we will have a user model, deck model, and a card model. First of all, we create resource routes with this command, PHP artisan make model card. Card will be our model, and it will be resource based. And then I'm passing the API flag for it. It will have factory and migration as well. And then we will run our migration as PHP artisan migrate. Building the RESTful API. An API project needs the matching REST APIs for the corresponding CRUD operations. For this matching, we will implement our API routes. I think I'm boring you. Slides जल्दी read कर रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे? Okay. मेरे पास टाइम कम है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट मूव करना चाह रहा हूँ. पहले जो स्पीकर्स थे वो बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने ले लिए. I'm sorry for that. अच्छा, REST naming conventions में this method, let's suppose we have get method. We want to get a resource. We will use the get method for it. The URL pattern is example users/users/id. जिस यूजर की हमने डाटा गेट करना है उसकी आईडी इस तरह पास करेंगे. For example, I have given an example users/123. These are basically few routes. Get all decks for a users. So how we will define its URL? Its route users decks card, then card for a specific card. Post, create a new deck. Deck is basically a model, a record against users collections. We use put for updating our deck, and there is its URL, and we will use delete for deleting the cards. Laravel has these routes for every verb: route get, post, put, patch, delete, options. These are normal routes. There are some special routes in Laravel, that is route match for multiple HTTP verbs and route any for all HTTP verbs. Basically, we use match. In match, we give a specific string. If the route matches with this string, you have to call this URL. And for any, we can define any string or sentence that if you get this route, you have to call this route and controller. In APIs, versioning is very important because if there is something new in our application, we can switch between API versions. If we have different versions like version 1, version 2, and we want to test our new product features with the new routes, then we can easily move to version 2 and test our products features in version 2, while version 1 will be keep in service for our products. So basically version 1 जो है वो हमारी product application वहाँ चल रही होगी और version 2 पे हम लोग मूव कर जाएंगे अपने न्यू फीचर्स को टेस्ट करने के लिए. इसी तरह वर्जन 1 के फोल्डर्स में Laravel प्रोवाइड करता है बेस्ट आर्किटेक्चर जहाँ पे हम लोग अपने वर्जन्स का स्ट्रक्चर रखेंगे विद डिफरेंट फाइल्स. दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल. यहाँ पे प्रीफिक्स वर्जन 1 रखा हुआ है और उसका मैंने फिर पाथ डिफाइन किया हुआ है API underscore v1, and then we have API underscore v2 in routes. So the first one is v1 and the second one is v2.
these are common HTTP status codes which I have defined, explained already. Okay, Sanctum versus Passport. As I said earlier, Passport is for full auth implementation. Use Sanctum for simple token-based APIs. Okay, token abilities defines specific abilities, permissions tied to each API, similar purpose as OAuth score. Tokens are checked in routes और controllers. जो आपने tokens define किए होते हैं वो routes और controllers में check होते हैं. It enables fine-grained access control per token. Okay, we can use gates as well in our authentication authorizations. Basically, gates have closure a function that determine if a user is authorized to perform a specific action. Define in auth service provider using gate define. Good for quick checks or app-wide permissions. Work alongside policies. Gates भी आप यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में और policies भी. ऐसे नहीं है कि आपने gates यूज कर लिए हैं तो you cannot use policies. You can use both in parallel. We use gates for broader rules, policies for model specific logic. जो हमारे gates होते हैं वो एक wider area of logic वहाँ होता है और जो policies होते हैं वो specific किसी model को deal करते हैं. अच्छा, implementing gates determine if a user is authorized to perform a given action. Gates always receive a user instance as first argument. जब भी आप gate define करते हैं वो user instance as a first argument लेता है. Gates optionally receive additional arguments like models to perform checks. Policies, it organize authorization logic in dedicated class. Policies के लिए when we write PHP artisan main policy, वो एक class create करता है जहाँ पे आप उस model के लिए उसके specific actions जो है वो user जो perform कर सकता है वो वहाँ define करते हैं. और वो जो है automatically resolved when using resource routes and controllers. जब आप naming conventions Laravel की follow करते हैं कि आपके model का नाम user है और policy का नाम user policy है, then you are following the Laravel naming conventions, तो वो उसको automatically get कर लेता है. Okay, for our DAG model we can create DAG policy. ये policy मैंने आगे define की हुई है, I will show that in code. PHP artisan make policy, DAG policy, आगे फिर हम model उसका बता सकते हैं which model. जब हम simple PHP artisan make policy, DAG policy करते हैं, it creates empty class उस model के against. लेकिन जब हम वो model आगे उसका flag pass करते हैं इस command line को, तो वो automatically viewing, creating, updating के functions create कर देता है उसमें. Okay. Introduction to API security. API security is the protection of APIs from unauthorized access, misuse, and attacks. This ensures data confidentiality, integrity, and availability. APIs often expose critical business logic and sensitive data. A single vulnerability can impact multiple clients and services. अगर आपकी API secure नहीं है, तो वो आपकी application और products को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपका सेंसिटिव क्लाइंट का डेटा लीक हो सकता है. Laravel जो है वो जो टॉप 5 सिक्योरिटी पैटर्न्स हैं उनको वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाने की सजेशंस देता है. अगर कोई भी API इन 5 रूल्स के मुताबिक लिखी जाती है, then we can say that API is the best and it's following the industry patterns. Broken object level authorization, broken authentication, excessive data exposures, lack of resource and rate limiting, broken functional level authorization. Okay, types of security considerations. अगर आपकी public APIs हैं, it requires strict rate limiting and authentication. और अगर internal APIs हैं within your organization use होती हैं, that still need authentication and proper access management. और अगर partner APIs हैं, you are partnering with someone, then that requires secure token management and scoped access. API security is the protection of API from unauthorized access, misuse and attacks. Use standard जो secure API design principles हैं, you can rely on proven authentication authorization.
You don't have to try new things with authorization and authentication. Least privilege access only give users access to what they need. अपने users को वो data देना है जो उसको चाहिए. Like let's suppose a user needs his order amount. What is his total order amount? Then you just have to include those fields and values from any extra data there. आपकी जो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में पाकिस्तान में बहुत होता है कि अगर आपके API में कोई इशू आ रहा है तो HTML का रिस्पॉन्स रिटर्न होता है. आप पोस्टमैन में देख रहे होते हैं नीचे सीधी सीधी सारी HTML होती है. वो APIs बेस्ट होती हैं जो एक्सेप्शंस भी JSON के फॉर्म में रिटर्न करती हैं और वो मशीन रीडेबल होती हैं. ठीक है, आगे जो आपकी APIs है, लेट्स सपोज यू हैव लॉगिन, रजिस्टर राउट्स और इस तरह की हो, तो उस पर आपने रेट लिमिटिंग लाजमी अप्लाई करनी है, वरना कोई भी डिब्यूज अटैक्स और आपके सर्वर पे थाउजेंड्स ऑफ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन अटैक्स करके आपके सर्वर बिठा सकता है. तो रेट लिमिटिंग लाइक 5 times per minute. तो ये चीज़ें Laravel जो है ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, एंड वी हैव टू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स. हम APIs देखते हुए जो है लॉगिंग और मॉनिटरिंग कर सकते हैं. APIs को आप जिस तरह हम लोग जब उसका कोड या कंट्रोलर एरिया में लॉग डिफाइन कर सकते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए. Laravel जो है लॉग फसाद प्रोवाइड करता है, मल्टीपल चैनल्स को सपोर्ट करता है. डिफॉल्ट एज यू नो कि Laravel API resources जो है I have not covered that area in my code because बहुत risky हो जाएगा. Basically जब भी आप आपके मॉडल्स और आपकी APIs के दरमियान Laravel resources exist करते हैं. आपने क्या डाटा रिटर्न करना है और क्या नहीं करना, और उसके अपने बेहतरीन टॉप मेथड्स भी हैं. So we have to follow those as well. यहाँ पे मैंने कुछ पोस्टमैन में जो है ये हमारा डेक का जो है राउट है, मैं पहले थोड़ा सा कोड दिखा दूँ. यहाँ पे ये आपको शो हो रहे होंगे, हमारे पास यूजर्स का रिसोर्स है, कार्ड्स का है, डेक्स का है. They have basically few methods and here is our deck controller जो कि आप इंडेक्स का मेथड देख सकते हैं, सारा डाटा रिटर्न करना है. फिर स्टोर है हमारे पास. इस तरह मैंने कुछ कोड जो है वो कमेंट आउट किया हुआ है, उस पर मैं आता हूँ. अगर आप API.php को देखें, it's about I'm telling here about versioning, how we can version our APIs. यहाँ पे प्रीफिक्स v1 यूज किया हुआ है और फिर उसका राउट मैंने बताया हुआ है. इसी तरह अगर हमने नया वर्जन देना है तो उसके लिए प्रीफिक्स डिफाइन करें. इसको हम फोल्डर बेस भी कर सकते हैं. राउट्स में v1 का फोल्डर बनाएं, फिर उसके अंदर API.php रखें. v2 का फोल्डर बनाएं, उसके अंदर API.php रखें और उसका URL दें. तो इस तरीके से हम लोग अपनी वर्जनिंग कर सकते हैं API से. अब API v1 में आते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सबसे पहले मेरे पास है API रिसोर्स डेक्स. यहाँ पे व्यू का रिएक्ट का जो स्टार्टर किट्स है. फिर हमारे पास अब तीसरी जो ऑप्शन है इनर्शिया है. लेकिन अगर आप सेंटर की तरफ जाते हैं तो फिर आपने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी लॉजिक्स खुद से डिफाइन करनी है. उसका सारा कोड आपने खुद लिखना है फॉर APIs. और टोकन मैनेजमेंट एबिलिटीज, you have to do all this work by writing relevant code. So here is auth controller. यहाँ पे यूजर लॉगिन हो रहा है, ईमेल पासवर्ड, आगे उसके पासवर्ड को हैश कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे we are creating a token. और यहाँ पे हम लोग उसको ये जो है टेक इंडेक्स की एबिलिटी, उस टोकन को उसको एबिलिटी इस टोकन को प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे फिर हम उसको लॉगिन करवा रहे हैं. सिमिलरली नीचे हम उसका टोकन जो है वो
डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. Somebody is calling me, I don't know who is that. Okay. ऐप सर्विस प्रोवाइडर की तरफ आते हैं. यहाँ पे अगर आपने थ्रॉटलिंग लगानी है, जैसे मैंने कहा रेट लिमिटिंग, आप यहाँ पे अपना रेट लिमिटर डिफाइन करते हैं बूट के फंक्शन में ऐप सर्विस प्रोवाइडर में. उसको मैंने नाम दिया माई थ्रॉटल का. और फिर इसी को जाके नीचे मेरी एक एपीआई का राउट है जिसमें मैंने इसको अप्लाई किया माई थ्रॉटल को. एंड इट्स दिस वन. ये आप अपना कस्टम जो है राउट थ्रॉटलिंग डिफाइन करके उसको अप्लाई कर सकते हैं. और फिर अब मैं थोड़ी सी उसकी पॉलिसीज की बात कर लेता हूँ. यहाँ पे जो ये वाला राउट है इसमें मैंने जो है पॉलिसी अप्लाई की है. जब आप पॉलिसी किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए लगाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यू एनी के लिए बेसिकली व्यू एनी में हम लोग क्या करते हैं फुल कलेक्शन शो करवाते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्लास का ऑब्जेक्टिव क्लास स्टैटिक क्लास वहाँ पे रिटर्न करवाते हैं एज आर्गुमेंट पास करते हैं. दैट्स फॉर डिफाइनिंग पॉलिसी कैन व्यू एनी. और नीचे जो है ये वाली वेब पॉलिसी इसमें ऑन सेंक्टम और उसके पास कैन कंट्रीब्यूट हमने दिया और व्यू टेक. ये हम उसको जो है एबिलिटीज उसकी डिफाइन कर रहे हैं. अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने टेक कंट्रोलर टेक पॉलिसी में. यहाँ पे आप देखें व्यू एनी के लिए मैंने लगाया हुआ कि इफ यूजर आईडी इज 1 रिस्पॉन्स करो, उसको अलाउ करो. और अगर वो नहीं है तो डिनाई विद स्टेटस 403. नीचे जो कमेंटिंग कोड है दैट वाज मैंने शुरू में कहा कि हम लोग HTML रिटर्न कर देते हैं. तो उस HTML को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्स डिनाई एज नॉट फाउंड तो बेटर रिस्पॉन्स ऑफ सिक्योरिटी. इसी तरह नीचे अब आते हैं तो व्यू के लिए यूजर आईडी इज 2 रिस्पॉन्स अलाउ आइदर डिनाई विद स्टेटस 403 और या डिनाई एज नॉट फाउंड. कुछ समझ आ रही नहीं आता? अच्छा, ये मुझे बार बार मैसेज किए जा रहे हैं कि स्पीड अप करने. वहां ध्यान क्यों किया यहाँ? सॉरी फॉर दैट. अगर मेरी चीज ऊपर से गुजर रही है, लेकिन इस हफ्ते में मैंने ये सारा जो है यूट्यूब पे डाला है और वहां पे प्रॉपर इसकी प्रोफेशनल वीडियो होंगी. एक एक स्टेप को मैं लेके चलूंगा, इस तरह भागम भाग नहीं होगा. तो इसी तरह मैं ज़बानी बताता हूँ. अभी बोर्ड में जाने से बेहतर है कि आप जब भी APIs डिफाइन करते हैं उसकी एबिलिटीज आप डिफाइन कर सकते हैं. एबिलिटीज दो तरीकों से होती है कि आप डायरेक्ट वहां करें या गेट्स या पॉलिसीज के थ्रू करें. दीज आर 2 वेज. दूसरा, आप जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, कोई आपकी API में एक्सेप्शन आती है, लेट्स सपोज नॉट फाउंड, आप यूजर /1 करते हैं और वो नॉट फाउंड है, लेकिन आप यूजर को नॉट फाउंड का एक्सेप्शन ना दें. आप अपना डाटा नहीं लीक करें, उसको ये ना बताएं कि ही डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम. आप ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाके एक प्रॉपर नॉट फाउंड के लिए एक कस्टम मैसेज डिफाइन करें. जब भी नॉट फाउंड का एरर आएगा तो वो यूजर की आईडी और सम अदर फील्ड्स ऑर्डर्स की आईडीज वो लीक होने के बजाय वो कस्टम मैसेज वहां पे शो होना चाहिए. दिस इज द बेस्ट वे. यूजर लॉगिन नहीं हुआ, इफ यू नीड ऑथेंटिकेशन फॉर यूजर कि आपने इस API को अगर एक्सेस करना है तो यू हैव टू लॉग इन. आप देखते हैं कि वहां पे भी HTML रिटर्न हो रही होती है, तो उसके लिए भी नॉट फाउंड के लिए स्पेसिफिक जो है एक्सेप्शन जो है ऐप सर्विस प्रोवाइडर में डिफाइन करें और वो रिटर्न करवाएं. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. जज़ाकल्लाह.